નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। ઘણા બધા વિડીયોઝ છે ચેનલમાં મુકાઈ ગયા છે, ન જોયો તો જોઈ લેજો। ઉપર વિડીયો સેક્શન બાજુમાં પ્લેલિસ્ટમાં જાજો, ત્યાં ધોરણ વાઇઝ તમને જુદા જુદા પ્લેલિસ્ટ જોવા મળશે, જેમાં સ્વાધ્યાય પોથીનો લગતી પ્લેલિસ્ટ, સ્વાધ્યાયને લગતા પ્રશ્ન જવાબ છે, મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નનું પ્લેલિસ્ટ, પછી નિબંધ લેખનમાં તો કે હિન્દી નિબંધ લેખનનો હોય ને ગુજરાતી નિબંધ લેખનનો હોય, એવા પ્લેલિસ્ટમાં તમને વિડીયોઝ જોવા મળશે જે આવનારી પરીક્ષામાં મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન તરીકે પૂછાય છે। એવા વિડીયો જોવાથી તમારી તૈયારી પણ થશે, સાથે જ્ઞાન પણ વધશે। ન જોયો તો જોઈ લેજો, બરોબર ને। આજે આપણે હિન્દી નિબંધ લેખનની અંદર ઉદ્યાન में प्रातःकाल की शोभा એ નિબંધની ચર્ચા કરવાના છે। એમાં અમુક તમને મુદ્દાઓ આપેલા હોય, મુદ્દાઓના આધારે તમારે નિબંધ લેખન કરવાનું હોય। એના માટે વાત કરીએ તો प्रातःकाल की शेर, सुहाना समा, शीतल पवन, पेड़ पौधों और फूल, पक्षियों का वर्णन, फवारे, हरियाली ने छेल्ले उपसार, એવા જે મુદ્દાઓ છે મુદ્દાઓના આધારે તમારે નિબંધ લેખન કરવાનું છે। તેના માટેની આપણે ચર્ચા કરતા રહી। તો प्रातःकाल की शेर में पहला आवश्य, छुट्टियों में मैं गांव से शहर अपने मित्र के यहाँ आया था। एक दिन सुबह जल्दी उठकर हम घूमने निकल पड़े। बातों बातों में हम शहर के प्रसिद्ध बगीचे जवाहर पार्क में पहुंच गए। बगीचे में प्रातःकाल की शोभा देखते ही बनती थी। बड़ा ही सुहावना वातावरण था। शीतल पवन बह रहा था। पूर्व दिशा में आकाश लाल लाल दिखाई दे रहा था। उगते हुए सूर्य की कोमल किरणें बिखर रही थी। वे किरणें वहां के पेड़ों पौधों पर गिरकर उनकी हरियाली को सुनहरी चमक प्रदान कर रही थी। उद्यान में प्रकृति अंगड़ाई ले रही थी। पौधों पर खिलते हुए फूलों को देखना बड़ा भला लग रहा था। सूर्योदय होने पर सूरजमुखी फूला नहीं समा रहा था। गेंदा, गुलाब, चंपा, चमेली आदि के फूल खिलकर अपनी खुशबू लुटा रहे थे। हवा में फैल रही उनकी सुगंध मन को मस्त बना रही थी। उद्यान के सरोवर में कमल के फूल खिलकर सूर्यदेव का हार्दिक स्वागत कर रहे थे। पेड़ों पर कुछ पक्षी कलरव कर रहे थे, कुछ आकाश में उड़ रहे थे। मादा पक्षियों को अपने भूखे बच्चों की चिंता थी। वे दानों की तलाश में निकल पड़े थे। कुछ दयालु लोग उद्यान के बाहर एक जगह भुने चने डाल रहे थे। कबूतरों की टोलियां चने के दानों पर टूट पड़ी थी। दूर एक कोने में कुछ लोग चिड़ियों को चावल चुगा रहे थे। कुछ लोग तरह तरह की कसरतें कर रहे थे। उद्यान में एक फव्वारा भी था। उसके पानी पर सूर्य की किरणें अनोखा सौंदर्य उत्पन्न कर रही थी। उद्यान के चारों तरफ हरी भरी घास के गलीचे बिछे हुए थे। घास पर चमकती ओस की बूंदे मोतियों का आभास करा रही थी। एक चित्रकार अपना चित्र बनाने में लीन था। वह हरियाली को ऐसा देख रहा था मानो आंखों से उसे पी जाना चाहता हो। हम बगीचे में घूमते हुए एक बेंच पर बैठ गए। बगीचे की प्रातःकालीन शोभा छोड़कर घर जाने का मन ही नहीं कर हो रहा था। हम वहां से लौट तो आए, पर आंखों में वह शोभा आज भी बसी हुई है। ऐसे उद्यान में बार बार गाने का मन होता है। આવા મુદ્દાઓના આધારે આપણે નિબંધ લેખન કરી શકીએ છીએ। વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો અને તમારા મિત્રોને પણ વિડીયો શેર કરજો। સાથે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। નવા નવા વિડીયો ચેનલ પર ફરી પાછા મુકાતા રહેશે। ન જોયો તો જોઈ લેજો। અને પરીક્ષાની તૈયારી કરતા એમાં ઘણા બધા મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન જવાબ પણ મુકાઈ ગયા છે। ઉપર પ્લેલિસ્ટમાં જઈને જોઈ લેજો। જોતા રહેજો, જ્ઞાનમાં વધારો કરતા રહેજો। થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર।